Hello, my lovely students of class 10th. Welcome back to English. Today we are kicking off a new chapter, Unit 4, The Earth Act Now for Tomorrow. This is part 1 of our lecture where we will begin our journey through this chapter together. So grab your books, get ready and let's dive right in. The Earth, Zameen, Act Now for Tomorrow. कल के लिए आज ही इकदाम करें. Earth is the planet where human life exists. Earth is the planet, जमीन वो वाहिद सयारा है where human life exists, जहां इंसानी जिंदगी मौजूद है. It is endangered due to abrupt climate changes. It is endangered. Endangered खतरे से दो चार होना. ये खतरे से दो चार है. Threatened, vulnerable है. Due to abrupt. Abrupt अचानक, sudden, unexpected. मौसमियाती तब्दीलियों में अचानक आने वाली शिद्दत के बायस ये खतरे से दो चार है. Saving Earth is our utmost duty to save future generations. Saving Earth, जमीन को बचाना, is our utmost duty, हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी है. Utmost, greatest, maximum, to save future generations, ताकि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जाए. Therefore, it is high time to take climate action to protect the planet. Therefore, इसलिए, it is high time, अब वो अहम वक्त आ गया है to take climate action कि हम मौसमियाती इक़दामात करें to protect the planet, अपने कुरे अर्ज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए. इसलिए ये अब अहम वक्त आ गया है कि हम कुरे अर्ज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर मौसमियाती इक़दामात करें. Climate change is one of the most pressing challenges our world is facing today. Climate change, मौसमियाती तब्दीली, is one of the most pressing challenges. सबसे संगीन मसाइल में से एक है our world is facing today, जो कि आज दुनिया को दरपेश हैं. यानी मौसमियाती तब्दीली आज दुनिया को दरपेश सबसे संगीन मसाइल में से एक है. प्रेसिंग चैलेंजेस, सबसे संगीन मसाइल. राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, melting ice caps, frequent natural disasters and shifting weather patterns are all signs that the planet is in trouble. Rising global temperatures, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, melting ice caps, बर्फानी तूदों का पिघलना, frequent natural disasters, कुदरती आफात में इजाफा, and shifting weather patterns और मौसमों के अंदाज में तब्दीली, और all signs, सब इस बात की वाज़िया निशानियां हैं that the planet is in trouble, कि हमारा सयारा खतरे में है. Climate action refers to the efforts taken by individuals, governments and organizations to reduce greenhouse gas emissions, adapt to changing climates and protect our environment. Climate action, मौसमियाती इक़दामात, refers से मुराद ये है, refers means indicates, से मुराद to the efforts वो कोशिशें हैं, taken by individuals, जो कि की जाती हैं अफराद, हुकूमतों और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन, फजा को आलूदा करने वाले गैसों के अखराज को. इमिशंस मींस रिलीजेस, अखराज, डिस्चार्जेस. अडॉप्ट टू चेंजिंग क्लाइमेट्स, मौसमियाती हालात से हम आहंग होना, अडॉप्ट, एडजस्ट, मॉडिफाई एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, आवर एनवायरनमेंट, और अपने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए. मौसमियाती इक़दामात से मुराद वो कोशिशें हैं जो अफराद, हुकूमतें और मुख्तलिफ इदारे फ़ज़ा को आलूदा करने वाली गैसों के अखराज को कम करने, बदलते हुए मौसमी हालात से हम आहंग होने और अपने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं. It is not just an environmental issue but also our social, economic and moral responsibility that demands urgent and collective action. It is not just an environmental issue, ये सिर्फ एक माहौलियाती मसला नहीं, but also our social, economic and moral responsibility, बल्कि हमारी समाजी, economic, माशी and moral इखलाकी जिम्मेदारी है that demands urgent and collective action, जिसके लिए फौरी और urgent means फौरी, immediate, pressing और इज्तमाई, collective इज्तमाई इक़दाम की ज़रूरत है. To understand the importance of climate action, मौसमियाती इक़दामात की अहमियत को समझने के लिए it is essential, ये ज़रूरी है to first know, पहले ये जानना, the causes, उन वजूहात, असबाब को of climate changes, मौसमियाती तब्दीली की बुनियादी वजूहात. मौसमियाती इक़दामात की अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मौसमियाती तब्दीली की बुनियादी वजूहात क्या हैं. The Earth's climate is naturally regulated by a balance of gases in the atmosphere. The Earth's climate, ज़मीन की आबो हवा, is naturally, कुदरती तौर पर regulated, मुनज़्ज़म रहती है, governed, managed और controlled,
کنٹرول رہتی ہے بائی اے بیلنس آف گیسز موجود گیسوں کے توازن کے ذریعے ان دا ایٹموسفیئر کہاں موجود فضا میں یعنی زمین کی آب و ہوا فضا میں موجود گیسوں کے توازن کے ذریعے قدرتی طور پر منظم رہتی ہے. However, human activities, especially since the Industrial Revolution, have disrupted this balance. However means nonetheless, nevertheless, تاہم adverb ہے. Human activities انسانی سرگرمیوں خصوصاً since the Industrial Revolution صنعتی انقلاب کے بعد have disrupted this balance اس توازن کو شدید نقصان پہنچا ہے ڈسٹرب کیا ہے یا انٹرپٹ کیا ہے. The burning of fossil fuels such as coal, oil and gas for energy releases carbon dioxide into the air. The burning of fossil fuels جلانے سے معدنی ایندھن یعنی انرجی سورسز کمبسٹائلز جو ایندھن جو چلائے جاتے ہیں معدنی ایندھن کو جلانے سے جیسا کہ کوئلہ تیل اور گیس فار انرجی ریلیزز جس سے توانائی گیس خارج ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے emit gives off کاربن ڈائی آکسائڈ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے. کوئلہ تیل اور گیس جیسے معدنی ایندھن کو توانائی کے لیے جلانے سے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں خارج ہوتی ہے into the air ہوا میں خارج ہوتی ہے. Other harmful gases like methane and nitrous oxide are produced through agriculture, deforestation and industrial processes. دوسری نقصان دہ گیسیں جیسا کہ میتھین اور نائٹرس آکسائڈ are produced پیدا ہوتی ہیں through agriculture کے ذریعے صنعت کے ذریعے deforestation جنگلات کی کٹائی یعنی فارسٹ کلیئرنگ اور انڈسٹریل پروسیسز صنعتی سرگرمیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. These greenhouse gases trap heat in the atmosphere, causing the Earth's average temperature to rise, a phenomenon known as global warming. These greenhouse gases جو حرارت کی حد کو برقرار رکھنے والی گیسیں ہیں یعنی یہ تمام حد حرارت کو برقرار رکھنے والی گیسیں ٹریپ ہیٹ روکے رکھتی ہیں حرارت کو ان دا ایٹموسفیئر فضا میں. یہ تمام حد حرارت کو برقرار رکھنے والی گیسیں فضا میں حرارت کو اپنے اندر روک لیتی ہیں کازنگ اور سبب بنتی ہیں دا ارتھ ایوریج ٹیمپریچر زمین کے اوسط درجہ حرارت کے رائز ہونے کا سبب بنتی ہیں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. فینومینا اور اس عمل کو یہ عمل جانا جاتا ہے ایز گلوبل وارمنگ عالمی حدت کے طور پر. فینومینا مینس اینی ایونٹ اور اکورنس. کمپلیٹ لائن دیکھتے ہیں. یہ تمام حد حرارت کو برقرار رکھنے والی گیسیں فضا میں اپنے اندر حرارت کو روک لیتی ہیں اور جس کے باعث زمین کے اوسط درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے. اس عمل کو عالمی حدت کہا جاتا ہے. The effects of climate change are already visible. The effects اثرات of climate change موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پہلے ہی are already visible پہلے سے ہی visible ہیں یعنی وہ نظر آ رہے ہیں. Glaciers are melting at alarming rates, leading to rising sea levels that threaten coastal communities. Glaciers are melting, برفانی تودے پگھل رہے ہیں at alarming rates یعنی بہت ہی خطرناک حد تک یا بہت ہی تیزی سے پگھل رہے ہیں. worrying, concerning جو کہ سوچنے کی بات ہے کہ گلیشیئرز بہت تیزی سے خطرناک حد تک پگھل رہے ہیں. leading to rising sea levels جس کے باعث سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے. that threaten جو کہ خطرہ بن رہی ہے. endanger menace خطرہ بن رہی ہے. coastal communities ساحلی آبادیوں کے لیے خطرہ بن رہی ہے جو کہ ساحلی آبادیوں کے لیے خطرہ بن رہی ہے. Extreme weather events such as hurricanes, floods, heat waves and wildfires are becoming more frequent and intense, endangering lives and destroying ecosystems. Extreme weather events شدید موسمی واقعات such as hurricanes جیسا کہ طوفان ہیں hurricanes, cyclones, typhoons, فلڈ سیلاب, ہیٹ ویوز شدید لہریں گرمی کی اینڈ وائلڈ فائرز اور جنگل میں لگنے والی آگ بش فائرز آر بیکمنگ مور فریکوینٹ پہلے سے کہیں زیادہ بار بار اینڈ انٹینس اور شدت سے ہو رہی ہے. فریکوینٹ مینس کامن, ریگولر, انٹینس مینس سویئر ایکسٹریم شدت سے رونما ہو رہے ہیں. یہ تمام موسمی واقعات یعنی شدید موسمی واقعات بار بار اور شدت سے رونما ہو رہے ہیں جیسا کہ طوفان, سیلاب, شدید گرمی کی لہریں اور جنگل میں لگنے والی آگ. انڈینجرنگ لائفز جس سے انسانی جانوں کو خطرہ ہو رہا ہے یعنی یہ نہ صرف انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اینڈ ڈسٹرائنگ ایکو سسٹمز بلکہ ماحولیاتی نظام بھی تباہ کر رہے ہیں. ایکو سسٹمز مینس
इकोलॉजिकल सिस्टम, हैबिटेट यानी जानवरों के जो मस्कन हैं उनको भी तबाह कर रहे हैं, तमाम माहौलियाती निजाम को भी तबाह कर रहे हैं। Farmers struggle with unpredictable rainfall and droughts, which impact food production and increase hunger in vulnerable regions. Farmers struggle, किसान सामना करते हैं with unpredictable rainfall, यानी ना बेवक्त, अनसर्टेन, अनफोर्सेबल, बेवक्त बारिशों का, एंड ड्राउट्स और खुश्क साली का। ड्राउट्स मीन्स ड्राई स्पेल्स, वाटर शॉर्टेजेस, खुश्क साली का सामना करते हैं, विच इम्पैक्ट फूड प्रोडक्शन। इम्पैक्ट मीन्स जो कि मुतासिर करते हैं, इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, जिसके जरिए ग़ज़ाई पैदावार, ज़रई पैदावार मुतासिर होती है, फूड प्रोडक्शन, एंड इंक्रीज हंगर, और इसके अलावा ग़ज़ाई किल्लत में इजाफा होता है, हंगर भूख में, किल्लत में इजाफा, भूख और किल्लत में इजाफा होता है। इन वल्नरेबल रीजन्स, कमजोर पसमानदा इलाकों में, वल्नरेबल मीन्स ससेप्टेबल, डिफेंसलेस, जो कमजोरी की तरफ ज्यादा जिसका रुझान होगा, ससेप्टेबल, वल्नरेबल उसे कहेंगे जो चीज कमजोरी की तरफ ज्यादा झुकेगी, मीन्स कमजोर, कमजोरों पसमानदा इलाकों में भूख और ग़ज़ाई किल्लत में इजाफा होता है। Furthermore, climate change disproportionately affects poor and developing countries even though they contribute the least to the problem. Furthermore, मजीद ये कि क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली के गैर मुतनासिब तौर पर, disproportionately, unequally, furthermore is an adverb, moreover, additionally and disproportionately, excessively, unequally, गैर मुनासिब तौर पर, इफेक्ट्स पुअर, इसके मनफी असरात गरीबों पर पड़ते हैं और तरक्की पजीर ममालिक पर पड़ते हैं। इवन दो, हालांकि अगरचे, दे कॉन्ट्रीब्यूट द लीस्ट, वो बहुत कम हिस्सा डालते हैं, लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, मिनिमल, बहुत कम हिस्सा डालते हैं इस मसले में, हालांकि इस मसले में उनका हिस्सा सबसे कम होता है। These communities often lack the resources to recover from disasters or adapt to environmental changes. These communities, ऐसी आबादियों के पास, often lack the resources, जरूरी वसाइल नहीं होते या बहुत कम होते हैं, to recover, दोबारा संभलने के लिए, कुदरती आफात से, from disaster, कुदरती आफात से दोबारा संभलने के लिए जरूरी वसाइल मौजूद नहीं होते, और adapt to environmental changes, या फिर मुताबिकत पैदा करने के लिए जो माहौलियाती हालात से, बदलते हुए माहौलियाती हालात से मुताबिकत पैदा करने के लिए भी जरूरी वसाइल नहीं होते। कंप्लीट स्टेटमेंट देखें, ऐसी आबादियों के पास कुदरती आफात से दोबारा संभलने या बदलते हुए माहौलियाती हालात से मुताबिकत पैदा करने के लिए जरूरी वसाइल मौजूद नहीं होते या कम होते हैं। दिस मेक्स क्लाइमेट एक्शन नॉट ओनली अ साइंटिफिक नेसेसिटी बट ऑल्सो अ मैटर ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। दिस मेक्स क्लाइमेट एक्शन, ये हमारे इस मौसमियाती जो इक़दामात हैं उनको बना देते हैं नॉट ओनली अ साइंटिफिक नेसेसिटी, ना सिर्फ एक साइंसी जरूरत, बट ऑल्सो अ मैटर ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, बल्कि इंसाफ, मसवात और जिम्मेदारी का भी तकाजा का मामला भी बनाते हैं। कंप्लीट सेंटेंस देखें, इसलिए मौसमियाती इक़दामात सिर्फ एक साइंसी जरूरत ही नहीं बल्कि इंसाफ, मसवात और जिम्मेदारी का भी तकाजा है। Recognizing the seriousness of the issue, countries around the world have come together to tackle climate change through international agreements. Recognizing, जानते हुए, पहचानते हुए या महसूस करते हुए, the seriousness of the issue, इस मसले की संगीनी को महसूस करते हुए, countries around the world, दुनिया भर के ममालिक ने, have come together, इकट्ठे हुए हैं, मिलकर फैसला किया है, to tackle, निमटने के लिए, tackle means निमटना, एड्रेस करना, confront होना, क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली से, थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मुआहिदों के जरिए, बैनुल अक़वामी मुआहिदों के जरिए। इस मसले की संगीनी को महसूस करते हुए दुनिया भर के ममालिक ने बैनुल अक़वामी मुआहिदों के जरिए मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है, या वो सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं। द मोस्ट नोटेबल ऑफ दीज इज द पेरिस एग्रीमेंट साइन 2015। इनमें से सबसे नुमाया पेरिस मुआहिदा है जिस पर 2015 में दस्तखत किए गए। Under this agreement, almost every country committed to limiting global warming to well below 2 degrees centigrade, with efforts keep it below 1.5 centigrade. सबसे अंडर दिस एग्रीमेंट, इस मुआहिदे के तहत ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, तकरीबन हर मुल्क ने कमिटेड, ये अहद किया है, टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग, कि वो आलमी दर्जा हरारत को कम रखने का अहद किया है, वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, आलमी दर्जा हरारत में इजाफे को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का फैसला किया है। विद एफर्ट्स कीप इट बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड,
اور جبکہ اسے 1.5 ڈگری سیلسیس سے کم رکھنے کی کوششوں پر کوششوں پر بھی اتفاق کیا ہے. To achieve this goal, nations have pledged to reduce carbon emissions, invest in renewable energy, and improve energy efficiency. To achieve this goal, اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اکمپلش یا اٹین کرنے کے لیے نیشنز ہیو پلیجڈ، تمام قوموں نے اس بات کا عہد کیا ہے، ممالک نے عہد کیا ٹو ریڈیوس کمی لانے کے لیے کاربن ایمیشنز، کاربن کے اخراج میں کمی، انویسٹ ان رینیویبل انرجی، انویسٹ کس چیز میں سرمایہ کاری کرنا یا فروغ دینا، انویسٹ مینس فنڈ فائنانس کرنا، یعنی رینیویبل قابل تجدید توانائی کے فروغ، رینیویبل مینس سسٹینیبل، ریپلینشیبل اور ریسٹوریبل قابل تجدید انرجی، قابل تجدید توانائی کے فروغ، اور امپروو بہتر بنانا کس چیز کو، انرجی ایفیشنسی، توانائی کو کے مؤثر استعمال کا عہد کیا. لک ایٹ دا کمپلیٹ سینٹینس. اس مقصد کے حصول کے لیے ممالک نے کاربن کے اخراج میں کمی، قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری کرنا یا اس کے فروغ، اور توانائی کے مؤثر استعمال کا پلج عہد کیا. ایفیشنسی مینس effectiveness, productivity.